हम्म। क्या? बंटी दीदी का नंबर? एक सेकंड। हम्म। क्या? ओके। ओके भाई, चालू कर दीजिए स्ट्रीम। यूनिटी चालू कर रहा था पहले। लेट मी स्टार्ट भाई। लेट मी स्टार्ट। ये अपनी स्ट्रीम पे जाके लिखना था। तब तक एम्पेरडोलिया चालू हो रहा है। And games looks pretty nice. What did I done? मैंने बहुत काम किया है guys, literally। हाथ पैर अभी कुछ imperfections आई नो, बट बहुत काम किया है मैंने इस गेम के ऊपर। तक दिस गेम का घर बनाने से लेके दुनिया कुछ करने तक मेरे को बहुत टाइम लगा। बेसिकली यूनिटी जो है साथ साथ हैंडल कर ही नहीं पा रहा था चीज़ों को, और बार बार क्रैश हो जा रहा था। तो बहुत मुश्किल से मैंने कुछ कुछ तैयार किया है। एंड मैं तुम लोगों को पहले प्रीव्यू दे देता हूँ। ओके, लेट्स सी। लेट मी गिव यू गाइस अ शॉर्टेज गुड प्रीव्यू टू यू। ओके, लेट मी सी। अगर कोई कमेंट करने वाला आता है बंदा तो गमछा गेमिंग वाईटी। Yep, we are live. Nice. Okay. So now as we are live, चलो तुम लोग को गेम दिखाता हूँ। तो गेम कुछ अभी ऐसा दिख रहा है। ठीक है। ये ब्रायन हाउस से मैंने शेड ले ही लिया, काम का लग रहा था। और ये गैराज भी ले लिया मैंने इस शेड से। इस शेड में एक लाइटिंग वाला सेक्शन भी है, विच इज़ प्रीटी कूल आई गेस। और डोर वाला सेक्शन आई डोंट थिंक वर्क कर रहा है। आई डोंट थिंक ये गैराज डोर वर्क कर रहा है। एनिमेशंस तो लगी हुई है। आई डोंट थिंक कि, मेरे को लगता है इसमें मेरे को वो लगाना पड़ेगा। ब्रायंस हाउस। एक सेकंड बस, दिखा रहा हूँ तुम लोग को। इंटरेक्शन, डोर ट्रिगर, डोर स्टेट, ब्रायन हाउस engine, ब्रायन हाउस destructible, door state, door trigger। I guess this is it। मैंने इसको दे दिया भाई, कुछ तो दे दिया मैंने। इसको दिया, किसको दिया? गैराज को दे दिया क्या? मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ सारी चीज़ें। गैराज डोर को क्या देना है अपने को? डोर ट्रिगर। एनिमेटर में यही आ जाएगा। तो अब मैं तुम लोगों को गेम चला के दिखाता हूँ कैसे लग रही बेसिकली। ये गेम एच डी आर पी पे है, सो इट इज़ गोइंग टू बी लिटिल बिट जैंकी, क्योंकि मैं स्ट्रीम भी कर रहा हूँ साथ साथ। एंड दिस इज गोइंग टू बी परफेक्टली फाइन आई गेस। चलते वक्त तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
गेम एक्चुअली ऐसा ही दिखने वाला है। तो कुछ एरर्स है अभी गेम में, लेकिन बाहर का स्काई वगैरह एंड एवरीथिंग फील्स प्रीटी नाइस। ये डोर, ये हर तुम ये देख रहे हो दीवार, ये दीवार बाई दीवार मैंने खड़ी की है भाई। दीवार बाई दीवार मैंने खड़ी की है, सारी चीज़ें मैंने लगाई है। ये क्रॉसर्स वगैरह जो है ये सारे भी मैंने ऐड किए हैं, ब्रांड्स वगैरह की हेल्प लेके हमने ऐड किया है। तो ये मैंने एक वरांडा टाइप का ऐड किया है जो बाहर में हम लोग एक्सेस कर पाएंगे यहाँ से। यहाँ पेज पे मैं कुछ लगा दूंगा, नहीं तो प्लेयर अभी गिर गिर सकता है। एंड यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कुछ चीज़ें पिकेबल है, कुछ चीज़ें पिकेबल नहीं है। यहाँ पे सीट्स लगा दी है मैंने जो काफ़ी लो पॉली है, बट अब दे आर वर्किंग प्रीटी फाइन राइट नाउ, सो मैं यहाँ पे कुछ और छेड़ना नहीं चाहता। जैसे ही हम लोग किसी पिकेबल आइटम पे ये करते हैं तो हमारे एक नीचे में ई आ जाता है जो दिखाता है कि ये आइटम पिकेबल है, विच इज़ नाइस। यहाँ पे हमने एक डॉग हाउस बना रखा है फॉर सम रीज़न। कोई डॉग नहीं है यहाँ पे, बट बस ये है। एंड गैराज वाला अभी काम नहीं कर रहा फॉर सम रीज़न। मैं गैराज वाला देख लूँगा, लेकिन गैराज जैसा हमारा नॉर्मल था वैसा ही है गैराज। हाँ, गैराज के अंदर से हम लोग यहाँ से देख सकते हैं कि गैराज के अंदर क्या है। तो गैराज के अंदर कुछ नहीं, बस एक लाइट है और थोड़ा बहुत डिटेलिंग की हुई है। ये हम लोग अंदर से देख सकते हैं कि हम लोग का घर कैसा दिख रहा है। घर अभी तो नॉइस दिख रहा है। यहाँ पे एक डोर लगाना है मेरे को, ये डोर खुलेगा नहीं जल्दी। सो हम लोग घुसते ही किचन में आ जाते हैं। दिस इज़ आवर किचन सेगमेंट। यहाँ पे एक गद्दा बिछाया हुआ मैंने है की मदद से बनाया था। उस मैप को, उस मैप पे बेसिस पे ही हमने बनाया है। यहाँ पर डिशेस वगैरह सोप्स वगैरह रखी हुई हैं। कुछ चीज़ें पिकेबल हैं, कुछ चीज़ें पिकेबल नहीं है। यू कैन सी दिस इज द आवर वॉश डिशेस सेक्शन, दिस इज आवर ब्रेड सेक्शन, दिस इज आवर टोस्टर सेक्शन। यहाँ पे थोड़े कपबोर्ड्स लगाए हैं, यहाँ पे स्टोव लगाया है। यहाँ पे जिस टाइम पे ये वारदात हुई थी, दैट इज 1968, उसका कैलेंडर भी हमने यहाँ पे लगा रखा। द मिरर्स आर ओके, दे आर फाइन, द लाइट रिफ्लेक्शन इज नॉइस। यहाँ पे हमने एक रेडिएटर लगा दिया, यहाँ पे कूड़ेदान, यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिक सामान भी हमने ऐड कर दिया है। और दिस साइड वी हैव आवर किचन टेबल विथ द लाइट विच इमिट। तो ये लाइटिंग वगैरह हो रखी है। यहाँ पे भी हमने एक कपबोर्ड डाला है, कुछ चीज़ें डाली है, कुछ पिक्चर्स डाले हैं एज द एआई सेड, वैसे ही हमने किया है। हियर वी हैव अवर लिविंग रूम। लिविंग रूम काफ़ी नॉइस है, मेरे को पर्सनली ये वाला जो सेक्शन है बहुत अच्छा लगता है। बेसिकली इट हैज़ एवरीथिंग विच मेक इट कूल। यहाँ पे देख सकते हो कुछ चीज़ें उठाने लायक है, कुछ चीज़ें उठाने लायक नहीं है, उस पर हम लोग बाद में आएंगे। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एवरीथिंग इज कूल। यहाँ पे हमारा बेड सेक्शन है। बेड में बेड पे हम लोग चढ़ भी सकते हैं फिलहाल के लिए ऐसे, एंड उतर भी सकते हैं। एंड बेड के बगल में रॉकिंग चेयर है, और यहाँ पे एक और हमने मिरर लगा रखा है विच इज़ प्रीटी नाइस। यहाँ पे एक लालटेन भी है जो रात में थोड़ा बहुत चमकता है, दैट इज़ ऑल्सो गुड। एंड यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कुछ स्टफ कॉस्मेटिक्स वगैरह रखे हुए हैं, उसके बगल में एक स्टूल रखा हुआ है। एंड दिस फील्स प्रीटी गुड, क्योंकि मैंने यहाँ यहाँ पे ये बैरिकेटिंग्स लगा रखी, क्योंकि आई रियली डोंट वांट टू यूज डोर्स राइट नाउ। ये डोर्स में बहुत सारे स्क्रिप्ट्स लगेंगे और फालतू हो जाएगा फिर वो सीन। और एक सीन, किसी भी सीन में मेरे को पर्सनली लगता नहीं कि मेरे को डोर लगाने की ज़रूरत है। ओवर हियर वी हैव आवर बाथरूम हियर, सो यप दिस इज गोइंग टू बी आवर बाथरूम। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि टूथब्रश वगैरह एंड पेस्ट्स रखे हुए हैं। ओवर हियर वी हैव आवर टॉयलेट एंड वी हैव वॉशर एंड अ ड्रायर, और उसके ऊपर डिटर्जेंट एंड स्टफ्स रखे हुए हैं। दिस इज गोइंग टू बी अ वार्डरोब। और यहाँ पे काफ़ी एम्प्टी सा बाथरूम लग रहा है मेरे को फिलहाल, बट दिस इज गोइंग इनटू द हॉरर एस्थेटिक्स, जो हॉरर गेम के एक एस्थेटिक्स होते हैं उसके हिसाब से जा रहा है। And you can see that we have our bathtub over here which is going to be rusty as usual। मेरे को लग रहा है मेरे को उसको बीच में प्लेस नहीं करना चाहिए था, बट देन आई सी एंड बाहर से दिस लुक्स pretty cool, क्योंकि बाहर से अगर प्लेयर घुसेगा तो उसको सिर्फ इतना ही दिखने वाला है। आई थिंक दिस लुक्स प्रीटी नाइस, प्रीटी कूल। एंड मैंने इतना ही काम किया है बेसिकली, और इतना ही बोलते वक्त मेरे को बिल्कुल शर्म नहीं आई, क्योंकि बहुत काम किया मैंने इसके ऊपर। बेसिकली ब्रायन हाउस से बहुत हेल्प ली हमने। ठीक है, यहाँ पे सोफ़ा वगैरह लगाया, यहाँ पे एक आर्म रेस्ट लगाया है, यहाँ पे भी एक एसी एंड एक कैबिनेट लगा दिया। छोटी सी जगह है यहाँ पे। यहाँ पे मैं जंप स्केयर्स देने के लिए सोच रहा हूँ कुछ प्लेयर को। अभी जंप स्केयर्स के बारे में ज़्यादा सोचा नहीं है, लेकिन हम लोग यहाँ पे एक सैनिटी बार के हिसाब से चलने वाले हैं। ऊपर में हम लोग आते हैं, ऊपर में हम लोग आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। दिस इज़ आवर रूफ एरिया। यहाँ से प्लेयर गिर भी सकता है एंड वापस चढ़ भी सकता है, सो दिस इज़ अ प्रीटी गुड एक्सपेक्ट। आई गेस एवरीथिंग इज एम्प्टी ओवर हियर, क्योंकि यहाँ पे अभी हम लोग काम करने वाले हैं। ऊपर में रूफ्स लगी हुई हैं, ऊपर में भी हम लोग कुछ जंप स्केयर्स दे सकते हैं। एंड द नीट पार्ट अबाउट इट, यहाँ पे मैं एक विंडो लगाया है, लेकिन इसे आप बाहर देख नहीं सकते। सो इट इज़ प्रीटी कूल। यहाँ पे थोड़ा सा लाइनिंग का यहाँ पे अभी गड़बड़ हो रखा है, क्योंकि यू नो एवरीथिंग इज जस्ट टू मच फक्ड अप।
तो फ्लैश लाइट के साथ तो यहाँ पे कुछ टेक्सचर्स वगैरह में भी दिक्कत है, which I will fix later. But everything for now looks pretty dope, looks pretty fine to me. और इतने टाइम मेहनत करने के बाद मेरे को लगता है I'm pretty satisfied with this. AI ने मैप बनाया था और सब कुछ मैंने बना रखा है। ये देखो कुछ चीज़ें पिकेबल है, इसमें निकाल के फेंक सकते हो तुम इसे बाहर, which is pretty dope I guess. एंड कुछ वासेस वगैरह जो है इसके, वो ब्रेकेबल भी है, जैसे कि यहाँ पे दोनों वास जो रखे हैं मैंने, ये सारे ब्रेकेबल है। Yep. And you can see this mug. This mug is indestructible, but you can throw this. We have some plants over here and we have a bed over here, which looks pretty fine to me. But for right now, this is the whole thing. मैंने दोनों ही vintage house and you know something else, I'm forgetting the name of it. फिलहाल के लिए मैं डॉट स्क्रिप्ट को मैं रिमूव कर दे रहा हूँ यहाँ से, क्योंकि आई डोंट थिंक इट इज़ वर्किंग प्रॉपरली। फिलहाल के लिए मैं प्लेयर को बाहर ना रखते हुए मैं प्लेयर को अंदर रखना चाहता हूँ, एंड फ्लैश लाइट के साथ भी हम कुछ करना चाहते हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स, क्योंकि ये प्लेयर के लिए ऐसा सीन होने वाला है, हमारे लिए ऐसा सीन नहीं होने वाला है। मैं इसे थोड़ा डार्क से हटा के ये दिखाना चाहता हूँ कि गाइस दिस इज गोइंग टू बी आवर सीन। ओके, सो यहाँ पे तुम लोग अब देख सकते हो कि अंदर में क्या हाल चाल है, बाहर में क्या हाल चाल है। एंड नाउ इट्स टाइम टू गो फॉर द जंप स्केयर आई गेस। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं चाहता हूँ, मैं पर्सनली चाहता हूँ बेसिकली कि यहाँ पे हम लोग कुछ स्टोरी वाइज ही चलें, जैसे हमारी स्टोरी थी। तो स्टोरी के हिसाब से अब जब भाग के ये वापस अपने घर आती है तो ये घर जाके छुप जाती है, और मदर घर जाके छुपने के बाद बोलती है कि वो बहुत डर चुकी है वगैरह वगैरह। देन बाहर से खटखट की आवाज़ आती है, बाहर की खटखट की आवाज़ सुन के वो उठती है, लेकिन वो डोर खोलने से बहुत डरती है, क्योंकि अभी उसके साथ ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं एंड शी डज नॉट लाइक इट एट ऑल। हम लोग भी बिल्कुल ही ये सब लाइक नहीं करेंगे ऑफ कोर्स, तो कोई भी किसी के लिए गेट क्यों खोलेगा। सो वो आस्क करती है, जो नॉर्मल मूवीज एंड पिक्चर्स में नहीं दिखाया जाता है, लोग डायरेक्ट जाके डोर खोल देते हैं, लोग बोलते हैं पागल है क्या भाई तू डायरेक्ट जाके डोर क्यों खोल रहा है। एंड दैट इज द थिंग कि डोर खोल दिया जाता है मूवीज वगैरह में, लेकिन हम लोग का प्रोटोगनिस्ट जो है, महिला जो है, बहुत स्मार्ट रहती है, तो वो डोर नहीं खोलती। वो डोर नहीं खोलती, वो बाहर से पूछती है आप कौन है। तो बाहर से आवाज आती है चिल्लाने की, तू पागल बुढ़िया, तूने पता है तेरे को क्या है किया है। ये बेसिकली एक मॉन्क रहने वाला है, दिस मॉन्क नोज एवरीथिंग एंड ही सेंस दैट देयर इज अ डिसबैलेंस इन दिस वर्ल्ड, समथिंग इज हैपनिंग व्हिच इज नॉट वेरी गुड। सो उसको पता चल जाता है, और उसको पता चल जाता है ये चीज़ कि शी हैज़ बिकम द सोर्स। अब वो जो गेट हमने दिखाया था वो गेट नहीं है जिससे वो डीमंस आ रहे हैं, बट जो हमारा प्रोटोगनिस्ट है, जो हम लोगों का कैरेक्टर है, वही एक डोर बन जाता है। नाउ नेक्स्ट थिंग नेक्स्ट, अब हमें प्लेयर को क्या करना है, डराना है, क्योंकि वही मेन बात है। क्योंकि हॉरर गेम्स में बिना डरे तो बात होनी ही नहीं है कुछ। तो अब हम लोग कैसे डरा सकते हैं, तो सबसे पहले तो हम लोग कुछ कमेंट्स करेंगे। कमेंट्स करना चालू करना है फर्स्ट ऑफ ऑल की इंटरेक्शन विथ मॉन्क एंड दिस बुढ़िया आई मीन द मदर। सो द मॉन्क और मदर के बीच में डिस्कशन होता है, तब मॉन्क को उसे डराना है, तो हमें कुछ बातें बनानी होंगी और कुछ बातें बतानी होंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बोलेंगे कि तू पागल बुढ़िया क्या कर रही है, यू ओल्ड विच, व्हाट आर यू, व्हाट द हेल यू थिंक यू हैव डन, ओपन दिस डैम डोर। एंड जैसे ही हम लोग बोलेंगे उसके ऊपर रिप्लाई हो जाएगा कि ये डोर तो बिल्कुल नहीं खोलना। एंड फिर उससे मॉन्क जो रहेगा वो एक्सप्लेन करेगा सारी चीज़ें कि क्या हो रहा है, जिससे हमारा प्लेयर जो है, जो हमें जो लिटरली उस गेम को खेल रहा है, वो भी समझ पाए कि भाई हो क्या रहा है बेसिकली। सो हम उन्हें समझाएंगे कि यू हैव बिकम द डोर, you thought that you left the door behind but you have become the door now। एंड एंड जाते जाते हम लोग एक बात बोलेंगे कि उधर से आवाज आने वाला तू पागल हो चुका है, एक्सेट्रा, यू नो नथिंग, गेट आउट ऑफ हियर। और जाते जाते हम लोग फिर एक बात बोलेंगे सिंपल सी, मॉन्क हमारा एक बात बोलेगा कि वॉट एवर हैव मे हैपन, स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे स्ट्रॉन्ग एंड स्टे स्ट्रॉन्ग बोलकर चला जाएगा। तो स्टे स्ट्रॉन्ग होने का मतलब ही वो बोल रहा है कि भाई यू हैव टू स्टे स्ट्रॉन्ग तुझे स्ट्रॉन्ग रहना होगा। सो बेसिकली
स्ट्रांग रहने का मतलब है कि तुम्हें हेलुसिनेट नहीं करना होगा। हम लोग एक हेलुसिनेटर मीटर बनाएंगे यहाँ पे यूआई वगैरह का हेल्प करके। इंसैनिटी मीटर होगा बेसिकली। इंसैनिटी, जैसे जैसे तुम्हारी इंसैनिटी क्या होती जाएगी, घटती चली जाएगी, वैसे वैसे तुम्हारे आसपास का चीज़ जो रहता है एकदम मडी होता जाएगा, तुम्हें कुछ ठीक से दिखेगा नहीं। यू डोंट नो व्हाट इज गोना हैपन, व्हाट इज नॉट गोना हैपन। और सबसे सारी चीज़ें अंधेरे में होती है, लेकिन मैं ऐसे उजाले में रखना चाहूँगा। सो हाउ नाउ द मैटर ऑफ फैक्ट हैपन्स कि हम कैसे इंसेनिटी को घटा सकते हैं प्लेयर की, विच आई हैव नो आइडिया। क्योंकि मैंने बहुत सारी गेम्स खेली है, स्पेशली विसाज एंड विसाज वगैरह वाले गेम में बहुत सारे डेवलपर्स ने काम किया था, एंड देयर मेथड ऑफ स्केरिंग पीपल वाज टू मेक द रूम अनकंफर्टेबल एज फक। लाइक उन्होंने, मैंने जब खेला था तो मेरे को हर एक कॉर्नर्स पे जाने में डर लग रहा था, हर एक चीज़ में जाने में डर लग रहा था, और बहुत सारी, और बेसिकली वो घर बहुत ही बड़ा था। प्रॉब्लम इज दैट मेरा घर बहुत ही छोटा है और मेरे को बहुत पैक्ड स्पेस में बहुत सारी चीज़ें करनी है, विच इज़ गोइंग टू बी अ टफ टास्क। इसलिए मैं एआई से पूछने वाला हूँ कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। बेसिकली दो तीन प्लान है मेरे पास ये करने के लिए, बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग फॉर लाइटिंग। पहले लाइटिंग नॉर्मल होने वाली है, क्योंकि एक टास्क रहने वाला है। एक मैंने जो सोच के रखा हुआ है कि मेरे को घर से बाहर निकलना पड़ेगा, और घर से बाहर निकलने के बाद मेरे को, घर से बाहर निकलने के बाद मेरे को गैराज में जाके अपना लाइट स्विच ऑन करना होगा। दैट इज़ गोइंग टू बी, ताकि मैं थोड़ा बाहर भी एक्सप्लोर कर पाऊँ। तो दैट इज़ गोइंग टू बी द थिंग मैं करना चाह रहा हूँ, जो सिर्फ एक ही बार होगा। वो भी हेलुसिनेशन को थोड़ा सा बढ़ाएगा। अब एक बात आती है कि हेलुसिनेशन मीटर बढ़ने के बाद क्या करेंगे, क्योंकि मेरे गेम्स में कोई चेक पॉइंट्स नहीं है। मैं इस चीज़ को बोलना चाहूँगा कि यही चेक पॉइंट होने वाला है बाय द वे, कि ये एक चेक पॉइंट है, उसके बाद से तो गेम भैया आपका आगे बढ़ेगी या तो यहीं पर टिकी रहेगी। सो मैं इस चीज़ को एक चेक पॉइंट जैसा बना के मार्क करके चलने वाला हूँ, और मैंने पहले ही बता दिया ये गेम सिर्फ एक सिटिंग में खेलने के लिए बनी हुई है। सो आई थिंक प्लेयर कुड टेक इट सीरियसली एंड दे विल प्ले इट इन वन सिटिंग। प्रोफेशनल प्लेयर्स एंड सभी खेलेंगे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम आई सी इज दैट मेरे पास सैनिटी घटाने के बाद प्लेयर को मारने का ऑप्शन है, या फिर मेरे पास ऑप्शन है कि मैं स्टोरी कंटिन्यू करूं। बट मेरे पास एक स्टोरी होनी भी चाहिए, लाइक लिटरली मेरे पास कोई स्टोरी के बीच वाले पार्ट्स गायब है। स्टोरी के फर्स्ट और एंडिंग मैंने गेस कर ली, बस स्टोरी का बीच वाला पार्ट थोड़ा सोचना पड़ रहा है मेरे को। लाइक कि मैं हेलुसिनेशन को अगर मैं फुल कर दिया, अगर किसी प्लेयर ने हेलुसिनेशन ज़्यादा कर लिया, पहली बात तो मेरे को ज़्यादा करवाना होगा, क्योंकि मेरे को फिर प्लेयर्स को क्या करना है, टपकाना है। या फिर बोल सकते हैं कि एक तरीके से मैंने सोचा था कि हेलुसिनेशंस बढ़ जाएंगे तो कुछ सरवाइव करने का मैं दे दूंगा कि डीमन स्पॉन हो जाएगा एंड दे हैव टू सरवाइव फॉर दिस मच सेकंड्स। बट आई थॉट दैट दैट आइडिया इज टू मच चैंकी एंड विल वर्क लाइक 1 और 2 टाइम। फिर मैंने एक गेम खेली थी हॉरर वाली, विच इज आई गेस द डे नाइट करके कुछ ऐसे ही था। द डे लाइट, नहीं कुछ अलग सा नाम था उसका, जिसमें एक बच्चा रहता है एंड ही उसको नाइटमेयर्स आते हैं। सो उसमें क्या था कि उसको मेमोरीज ढूंढनी रहती थी। ये भी एक मदरसन बेस्ड गेम है, तो आई गेस मेमोरीज इज गोइंग टू बी द थिंग आई एम गोना डू। आई एम नॉट एक्चुअली श्योर, क्योंकि मेमोरीज बनाने के लिए उसमें बहुत मेरे को ये करना पड़ेगा, like cinematics वगैरह and stuff, so I am not preferring that option is, you know, क्योंकि उस ऑप्शन को प्रेफर करने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगेगी, और मैं और मेहनत नहीं करना चाहता। लाइक इस हाउस को ही बनाने में मेरी हालत ख़राब हो रखी है। सो फॉर नाउ लेट्स गो फॉर लाइटिंग्स। और मैंने देखा है ये विंटेज हाउस में कुछ कुछ चीज़ें जो रखी है पिंक ही हो रखी है, वो कुछ भी करने से चेंज नहीं हो रही, बट कुछ कुछ चीज़ें जो है ठीक है। सो हम लोग उन्हीं का इस्तेमाल करते हुए अभी, मतलब वो चीज़ें जो अभी पिंक पिंक सी हो रखी है, विच आई डोंट लाइक एट ऑल। तो यहाँ पे हम लोग कुछ लैंप्स डालने वाले हैं, कुछ इस प्रकार के लैंप्स। मेनली बाथरूम वाले लैंप्स ना मेरे को ज़्यादा काम आएंगे। रुको, कुछ दिख नहीं रहा है, एक तो ये अंधेरे में ज़्यादा ही अंधेरा कर दिया मैंने। एनीवेज, इस लैंप को इधर ले आओ। इस लैंप में लाइट डालो, क्योंकि ये लैंप ऑन है, तो आई गेस मैं इसमें लाइट डालूंगा।
LIGHT, uh, TW light, so that it can lit up some light for us. Nice. We are gonna use this lamp again and again, so yeah. I think this much light is good. This light is more than enough. I think it's more than enough. Yep. रात का टाइम है, I mean, so yeah. Pretty good, pretty good. क्या हम लोग ऊपर में लाइटिंग देने वाले हैं? I don't think so. Yep, this feels nice. This is creating the horror aspect much, much, much worse. Like, यही horror aspect बना रहा है मेरा. And you want it worse. You don't want it good. You want it worse. कि जितना खराब हो सके, एक्सपीरियंस उतना खराब रखना है. आई लाइक दैट यूनिटी ने ये दे रखा है कि पता चल रहा है कि कहाँ पे इंसिडेंट हो रही है लाइट और कहाँ पे नहीं हो रही. एंड दिस लुक्स प्रीटी नाइस. ओके, यहाँ पे एक डोर ऐड करते हैं एंड फर्स्ट सीन का शुरुआत करते हैं. जंप स्केयर्स के बारे में लास्ट में सोचेंगे. सो यहाँ पे मैं एक डोर लगा देता हूँ फिलहाल फिलहाल के लिए. और वे प्लेयर को अंदर स्पॉन कर देते हैं. वेयर इज दैट मदरफकिंग डोर भाई? वेयर इज दैट डोर भाई? इज दैट अ डोर मैट और डोर? दिस लुक्स लाइक अ डोर. वेट अ मिनट, आई हैव अ गुड डोर हियर. आई हैव अ गुड डोर हियर. यहीं तो लगाया था एक डोर. आई थिंक मैंने डिसेबल कर दिया था डोर. हाँ, क्योंकि प्लेयर आउटसाइड स्पॉन हो रहा था. डोर 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 डोर. Yep, here's the door. And this looks pretty dope. फिलहाल के लिए मैं फ्लैश लाइट ऑफ रख रहा हूँ इसकी. इसमें मैंने प्लेयर में एक फ्लैश लाइट डाली है. बट फॉर नाउ आई डोंट थिंक वी नीड दिस फ्लैश लाइट एनी मोर. मेरे को खुद नहीं दिख रहा था, इतना अंधेरा हो रखा था, इसलिए मैंने डाली थी. बट दिस फील्स लाइक इट डज नॉट नीड एनी फ्लैश लाइट. एंड मोर ओवर आई थिंक कि इट इज एडिंग समथिंग टू, यू नो, इट इज लिटरली एडिंग समथिंग टू. ओके, एक प्रॉब्लम है मेरे पास कि ऊपर में भी फ्लैश लाइट क्यों आ रही है. बट ठीक है, आई थिंक इतना लाइट रहना ज़रूरी है गेम में. बट फिर भी ओके, लेट्स ट्राई. अगर ट्राई नहीं करेंगे तो कभी पता भी नहीं चलेगा. सो सीन ऐसा है कि अपना प्लेयर जो रहेगा अभी यहाँ पे उठेगा. सो प्लेयर को इधर ले आया जाए. कंट्रोल शिफ्ट प्लस एफ. एंड नाउ लेट्स नॉट रोटेट आवर प्लेयर एट ऑल. आई थिंक इट्स प्रीटी डोप, इट्स प्रीटी फाइन. Let's try and run the game and see how the things are going on. So Fears to Phantom अगर तुम लोगों ने खेला है तो तुम लोगों को पता होगा एक बज करके आवाज आती है ताकि वॉइस एक्टर ना होने के बाद भी लगे कि गेम में एटलीस्ट वॉइस है जब कुछ कोई बोल रहा है तो. एंड टेक्स्ट स्क्रीन पे आता है जो तुम लोग बैठ के पढ़ते हो. एंड दैट आई फील इज प्रीटी नाइस, सो आई थिंक आई विल गो विद दिस. ओह, दिस लुक्स सो फाइन. दिस लुक्स सो गुड. दिस एक्चुअली लुक्स सो गुड. नॉक ऑन डोर की आवाज आ रही है अभी और हम लोग मुड़ के डोर ढूंढने जाएंगे कि डोर कहाँ है. क्योंकि डोर तो दिख ही नहीं रहा भाई, इतने अंधेरे में डोर है कहाँ? किसको पता चलेगा डोर है? यहाँ पे एक ट्रांसलूसेंट लाइट लगानी पड़ेगी मेरे को आई गेस. बट दिस लुक्स प्रीटी नाइस. आई कैन डू 100 थिंग्स हियर बिकॉज यहाँ पे लाइटिंग इतनी लो है. यू वोंट फील सेफ इनफ. You won't feel safe enough. And this is at highest settings. Wait a minute. 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 Let me cook, guys. Let me cook. First of all, मेरे को डोर पता लगने चाहिए ना कि डोर है यहाँ पे. For that, I have to do something. And this is our door, I guess. Where is my door? Yep. And door. Yep, this is our door. I have a trans. I have a lamp, I guess. A little lamp.
Yep, this one. We can just place this one over here and इसको मैं 90 डिग्री घुमा के रख देता हूँ and let's give it a light and इसका light बहुत कम रहेगा. I don't want to ruin the kitchen experience for them. So light will not be this much bright, but rather it is going to be the radius will be very low. We cannot go 0. Let's set 2. Let's even say 1. Oh, we can okay. Yep. No, no. Yep. This much will do. A little low light. This is pretty good, I guess. And just put it back here. And let's try again. I feel this looks fine. I feel this looks very fine. So player will be here. कुछ चीजें देख रहा होगा, कुछ चीजें समझ रहा होगा. And he will be like, yeah, this is a nice game, I guess. And yeah. Wait a minute, wait a minute. This is not going to be the game, actually. This is not going to be the game. Wait a minute. We are not going to add the directional lighting to the scene. It is going to be dark as fuck. Like this. Now we are ready. This is going to be dark as fuck. You cannot see anything. Yep. Now this is going to be the game. And this actually scares me a lot. Damn. This basically scares me a lot. Just add some sounds, because sounds are the game. Because sounds are the heart of the horror games, I guess. So this is gonna scare the fuck out of you. This is going to be a door. Nice. I need to align it a little bit, but yeah, this feels good. This feels nice, basically. I think I will lower the lighting, or I think the lighting is just perfect to create the experience. Just look at this. Because one part is super bright and another part is like fucked up. And I like how you cannot just see through this. Like you will think that yeah we can, but no we can't. See man, this feels pretty good. This feels pretty nice. I will say I have to say basically, this feels pretty good. Let's see upstairs. Oh yeah, damn this feels nice. Yep, I can create so much horror experience for you guys here. I can do work over here basically. And then you come over here. Damn, this looks and feel good. But you won't going to get this light forever. I'm gonna steal that privilege from you. So now, 2 to 3 things we have to do. Like first of all, the knock sound we need. Second of all, we're gonna create a trigger of the at the door. So when we come to the door, we are gonna get some scripting over here. And I want to be able to close to the door so we can get the info. So basically this close I guess will do. And when player is here I will restrict all the movement, of course. And then after the scene we will see what we can do after that.
Because I have, for right now, I have no idea what to do. I'm gonna just ask AI to do something. For now, I just don't know. But yeah, this feels pretty good. This gives me the horror aspect that we need in our life. This is dope. This feels super good. Like super, super good. You want the horror? You will get the horror over here, man. Believe me when I say that. Yep, pretty good to me. Pretty good to me. Okay, let's go ahead. Okay, we are live here. Oh my God. Can you hear that? I don't know if you can hear that. My laptop is going crazy with the fans. Okay, let me just close some bunch of tabs so you don't see what I'm watching. Yeah, I'm watching some anime right now, anyways. Okay. So we need some knocking sound first. So we're gonna go for Pixar bass sound effects, demonic chanting, and knock sound. We need a loop knock sound. Knock on door. Oh, this is good. This will scare the shit out of them. Let's see that. Oh, oh. You know what? This one is good because it has the last 3 seconds of that, which basically is good for us. Know why? Because we are the angry monk. Okay, we are the angry monk. And if we are the angry monk, it just simply means that you are getting impatient, and it simply implies that. So let's download this one. Thank you, free sound community. I have taken a lot of sound from you. Let's go. So now we have the sound. We need to create a AI system for this. So we have a box collider in the door. I want a script so that if player uh, interact, or you can say collide, or you can say triggers the door, the uh, UI text, or you can say game object will be enabled. So let it create that thingy, and we will add the sound effect on the door. That is going to be first thing first. And before this first thing first, we need ominous sound music basically. So
Perfect. 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 Free sound community. You guys are cooking. Oh my god, it's perfect. Let me listen to the whole thing. Oh my god. I have to physically lower my desktop volume. This is just perfect. But let me listen to other also. Ah, no. Well, most I think will use this. I personally think this, which I have to literally uh, do stuff to. Oh my god, this is cool. This is cool, but this is just when you know your horror music is fucking crazy when you have to physically lower the volume of your PC. So thanks for free sound community. Thanks for this one, man. Love you guys. Free and for free stuff. I love you. Don't sue me again. Okay. So we have our thingy over there. Now I have to create stuff on UI. So you guys know First Phantom? Let me teach you something. First to uh, Phantom. Uh, so if you go ahead and click on image, and you will see that you have this kind of voice lines there. I want to use these. I want to use these type of thingies, like the subtitles. Yep, right over here. You can see this. We're gonna use this basically. So we need to go ahead. You can see everything over here that I have done. But anyways, you see the map? You don't see the map? Let me teach you something. This was the map. Oh, let me go there. You see this? You don't. Now you will see this. This is the map which I have been worked on, and this definitely don't look like pretty much, but it is it. You gotta believe me. Anyway, we're gonna go ahead and create a UI canvas, so we can do canvas thingy on this. So we're gonna name our canvas text basically, text canvas, because it is going to create our monologue thingies for us. And let's go 2D with this. Now, what I need is this thingy to show up like show the different thingies that we are working on. You will understand it. Calm down. So now I want like to have we have to create a script for this. So we're just gonna go ahead and create a text mesh pro for this UI and text mesh pro, and we're gonna go simplified over here. So let me just take it and place over here, and I want
it to be whitish. I want it to be bold and italic. More importantly, with whatever this is, small caps. I think this much will do. Let's auto size it. And this is going to be white. So now let's create another script. Wait a second. Okay. So it has created a good script, I guess. So my UI canvas is initially disabled, but when it gets enabled, I wanted to I wanted to uh, to use TMP Text Pro to show different lines in the scene, one after another. Now we are using this. So on enable, yeah. I have a lot of lines, by the way. Okay, he is fucking with me right now. But I don't want to fuck with you. So I will just go ahead and do the thing you said me to do. And I think we are done with the slam thing. And now, in the game files, in the script section, I will create another script for chatting. This is a chat or convo that happened. Let's do the coding. Okay, so we're gonna change from up to down. Change from up to down. Bit change from up to down. What the fuck? Will we? Now we are using TMP Pro. Save it. Now we can just give it to, I guess, text canvas because that is gonna happen anyways.
Okay. So yeah, we can add the lines. So I think we can just write you. So we will start with who is this? What are you doing at this time? What do you want? I will The old man says, You, you wrecked witch. Open this damn door. I know. I know what did you did. सो अब यहाँ पे बूढ़ा आदमी बोलता है क्या होना चाहिए आई एम कॉलिंग द कॉप्स इफ यू डिडंट लीव then you did not closed the door ना डोर तो मतलब बहुत लेम वर्ड हो जाएगा ना गेट you didn't close the gate no you
have become the gate. मतलब थोड़े डम तो होते हैं ना कैरेक्टर्स, आई मीन सम कैरेक्टर्स आर डम इन द गेम, यू नो। I am now leaving, but remember, 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 don't get, do not get killed. या फिर but remember be strong लिख देता ना, be strong. Okay, so now everything is in place. I think this should show up right now. Like अभी तो मतलब enable ही है, but in the game this will be disabled, and only will be enable when you go to the, you know, outside. I mean at the gate. So when you are at the gate now, this should be like this. So it is enabled now. Who is that? Okay, 2 seconds. I don't think it. 2 seconds is the highest thing, and I want it. So like it is like typewritten. Okay, मेरे को ऐसा चाहिए कि it is like typewritten. Everything is typewritten. Typewriter effect बोलते by the way. And 2 second delay is too small. I will give at least 7 second delay so player can read everything out loud. And let's get into the script and say that we want typewriter effect on this. Give me typewriter effect on this. But character by character. Let's go. मैं पूरा कॉपी कर सकता हूँ नहीं, यहाँ से हो गया ना। ऑप्शनल, skip to full lines, add audio like a beep, animate the text। नहीं भाई, fade in ना, उतना करने की जरूरत नहीं भाई। सबको पता सिंगल मेड डेव गेम्स कैसे होता है उतना। भाई लाइक पूरा गेम ही बनाना अपने को, एंड वी आर लाइक ये नहीं होना चाहिए, सो लाइक या नो, थैंक यू। हाँ थोड़ी गेम में the game has a little bit problem that is like picking up the waves and throwing the waves give a non-referential something something, so I have to fix that one too. But the game does not get crashed, I guess. There are errors, but the errors are not that much big to crash the game. So I guess it should work, I guess. I don't know. Okay, let's see. I will add the sound and the knocking sound both at the same time. Who is that? What do you want? Okay, 7 second delay बहुत ज़्यादा लग रहा है मेरे को.
Old man, you wrecked witch, open this damn door. 5 seconds is good enough, I guess. ऐसा दिखेगा कुछ. You. बज वाली इफेक्ट चाहिए मेरे को. Old man, I know what did you witch? He knows. I'm calling the cops if you didn't leave. You didn't close the gate. Now you have become the gate. Final warning. 5 second delay is enough. Old man, I am not leaving, but remember, be stronger. Be strong is good. Not be stronger is bad. Like, be strong is good. Okay. 5 second delay and be strong. Okay. Let's do this. Let's change some lines, I guess. Be strong. Stay strong, I guess. Yeah. Not be strong, but stay strong will do. Stay strong. Or else you will invite some unwanted guests. Yep, this is just best, and the delay should be of like 5 seconds. And typing speed is also good. Okay, okay. Yep. All done, all done. So now let's go back to our scene. So door trigger. पहले door कहाँ पे अपना? Door पे चलो भाई पहले. Portal 8 पे आओ and then door पे चलो. इसे थोड़ा अलाइन करना है by the way. इस चीज़ को थोड़ा अलाइन करना होगा मेरे को. It is like on dead center of this. And door पे I will give a audio source. ऑडियो के लिए आई गेस मिसलेनियस में म्यूजिक था नहीं म्यूजिक है म्यूजिक में भी SFX में सब रखा है मैंने ओके नाउ आई विल यूज जस्ट द म्यूजिक two things creepy sound and knock on the door okay so knock on the door and suspense on okay so player कहाँ पे अपना player I think इसके पास एक audio source है I guess so नहीं okay anyway we'll just drop in the audio source and now the knock on the door this is just play and wake and loop and player 1 2 player I want that this sound to be a little low I guess हाँ एक सेकंड now on loop yeah. And the volume should be a little lower than that so we can hear the knocking the forced knocking DJ sound DJ sound जग घूमिया थोड़ी जैसा न जग घूमे
Okay. Bad decision choice, I guess. ये आई थिंक नॉकिंग की साउंड थोड़ी कम होनी चाहिए एंड ओमिनियस सस्पेंस की आवाज़ थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए आई गेस. And I want this sound to be disconnected. Like this sound will not play anymore when the player reaches on the door. So it is not like कि वो भी हो रहा है साथ साथ वो भी हो रहा है. Oh, I pressed it again. Fuck, my bad. बट आवाज़ कम लग नहीं रही थी. आई डोंट थिंक आवाज़ कम हो गई है. Hmm, थोड़ा सा 0.7. एंड सस्पेंस वाले में पहुंचने में वहाँ पे थोड़ा टाइम लगता है उस नॉक को हिट करने में. ओके, सो नाउ लेट्स क्रिएट सम स्क्रिप्ट्स फॉर ट्रिगर एंड उसके हिसाब से काम होगा. सो लेट मी जस्ट ये टेक्स्ट कैनवास को मेरे को हटाना होगा फर्स्ट ऑफ ऑल. तो टेक्स्ट कैनवास को हम लोग अभी बंद करते रहे. टेक्स्ट कैनवास हम लोग लगाते हैं. सो आई विल बी राइट बैक. वेट अ मिनट. आई विल बी राइट बैक. आई विल बी राइट बैक कहाँ से होता है? आई विल बी राइट बैक गाइस. ओके, नाइस.
We are back, I guess. Yep, we are back, I guess. We are back, I guess. Just a minute. Hmm. Okay, all good, all fine. Yep. Okay, what else we are doing today? Oh, okay. So what we have to do? Yeah, we have to make a game. I think the ominous sound is crazy good. Okay, so first we need to create a drawer trigger and then we will do the things. So it has a box collider. Let me see. What is this box collider, man? And this box collider is going to be like I love how they fix some stuff. Like they know this is going to be a box collider, but it does not mean you will just browse through. They give us the provide context thing. So yeah, it is gonna stop you from going in that thing. It is going to be a trigger also. And let's add a script to it. Do I have a trigger one? No, I don't have trigger one. Create a folder or one behavior script for drawer trigger. Now we have a drawer trigger. Now let's say ChatGPT to make it. So we have a door in the scene. I want when player gets in the box collider of a door, it triggers enable enable a game object and disable the audio source it has in it. Okay. Oh, this is a pretty good piece of code, I guess. Player should be marked as player. Okay. Yes, to all you said. Disabling with fade out effect. Optional delay only triggers once per session. Okay. Copy this and we just gonna use it in our game. Where it's the trigger. Use it. Will be. We have used it correctly, I guess. I'll save it and get back into game. And next thing we need a buzz sound effect. So it intimidates that
something is happening or some like I don't have any voice characters. I don't want to use AI for it because it is going to sound fucked up. And artist does not never goes with AI, so many people will be very rude about it. So I don't want to do it. So we just gonna go ahead and add. Where is my drawer trigger? Yep, here it is. Put that good boy there. Now we want to enable this game object which we have made. This is our text canvas. Delay before enable. Like I need 2 second delay before it enables. One time game trigger, of course. Let's roam around a little bit and see if the knocking sound matches the stuff. I don't care if player just decided not to play by the book and go to the door and act as a total asshole and go upstairs, downstairs, whatever. Nothing's gonna be enabled in this scene, of course. Oh my, yeah, that is what I want to play. Oh, I'm not tagged. Oh, I'm tagged display. Damn, that's loud as fuck. 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 But it does its jobs correctly, I guess. But we want one last thing, that is that this whole thing's get disabled after like the thing ends. On this text at last to disable after completion.
Okay, let me just. After each line is being done, I want it off. Copy this. Save this. And this, let's call it today. I have to see other things also. No, bro. What the fuck you are importing, man? Okay, perfect, perfect. Perfect, perfect, absolutely perfect. This will do. This will do its thingy. This will do its thingy. So first thing which I wanted to do is done. It does not look what I have thought in my mind. But yeah, this is pretty cool. I like it. And everything is pretty good, even though the script's name are not the same. But yeah, it is holding up pretty good. Everything's pretty nice and pretty good, I guess. So yeah, and now else I'm gonna do is to think that how the game mechanics will work. Because in my head it was all cool, but now on paper it looks pretty bad. So yeah, I'm gonna see for that. For now, I think yeah, today's today was a good day. We save this. Let's let's close this. And hopefully you'll like this video. No one watching though, but I think when I upload this game, some
Someone will be here, someone will be watching, and it will be also recorded. So, yeah, not a big deal. Bye, guys.